समझे कि नहीं समझे? अभी क्या हो जाएगा 1962 2 इन ब्रैकेट 1962 minus 1966.5. Solve the bracket first. क्या हो जाएगा? क्या आंसर आएगा? 1962 minus 1966 minus 4.5 into 2 into 2 है बाहर. So final answer is minus 9. Clear? Clear दोस्तों? So what happened? 1962 is converted to minus 9. समझा क्या? अभी सम करेंगे तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा. ओके, चलो आगे चलते. Here h is the difference between successive t values. H is difference between successive t values. Now after transformation the linear train equation is, ये देखो ये आपका पहला इक्वेशन था, ये आपका पहला इक्वेशन था, ये भी ट्रांसफॉर्म हो जाएगा. दिस इज ओरिजिनल, दिस इज ओरिजिनल ट्रांसफॉर्म टू. क्या डिफरेंस दिख रहा है आपको? कुछ दिख रहा है क्या डिफरेंस? टी गया, टी की जगह पे यू आ गया, प्लस ए डैश एंड बी डैश आ गया. हेलो, when you transform t becomes u, a becomes a dash, b becomes b dash. After transformation तो हमको ये वाला याद रखना है, y is equal to a dash plus b dash u. What is the original? Original is this formula, y is equal to a plus bt. But after transformation the formula is this. Okay, next. Even normal equation will change. Now there are two normal equation. ये देखो ये वाला था, इधर क्या हो गया? ये जाके ट्रांसफॉर्मेशन के बाद क्या होता है? Okay, let me tell you. After transformation, the first thing changes is t becomes u. समझा क्या हो जाता है? ट्रांसफॉर्म करने के बाद t का क्या हो जाएगा? u हो जाएगा. सेकेंड चेंज, a will change to a dash and third b will change to b dash. Yes, original terms get transformed. ओरिजिनल में जिधर जिधर हुआ a है उधर क्या क्या हो जाएगा? a डैश हो जाएगा. b है उधर b डैश हो जाएगा. सो दैट वी नो इट इज ट्रांसफॉर्म फॉर्मूला एंड t बिकम्स u. वो तो हमको मालूम है, हम लोग ने t को u में ट्रांसफॉर्म किया है. समझे क्या? समझा क्या? देखो ये वाला फॉर्मूला. अभी रिक्वायर्ड समेशंस देखो, एरोस करके बता रहा हूं मैं. नॉर्मल फॉर्मूला क्या था? समेशन y था, इधर भी समेशन y, नो चेंज, इज इक्वल टू एन ए बिकम्स एन ए डैश, एन रिमेन्स एन. सिर्फ तीन चीजें चेंज होता है, t बिकम्स u, a बिकम्स a डैश, b बिकम्स b डैश. देन b समेशन t था, तो समेशन t की जगह पे क्या आएगा? b का b डैश हो गया, t का u हो गया. समझे क्या? समझे क्या? समझ में आ रहा है क्या? डेफिनेटली आफ्टर डूइंग वन और टू सम्स और ज्यादा क्लियर हो जाएगा. वाई टू ट्रांसफॉर्म क्यों करने का? टाइम पास के लिए. Why to transform t to u? To make the calculation simpler. Okay, if I don't transform, what will happen? Will I get the answer or no? Without transforming, will I get answer? Yes or no? Yes, to make calculation easy we have to transform, but मेरे को transform नहीं करना है. Will I get the answer? Without transformation will I get answer? Yes.
I'll get answer, but it will be too time consuming. Suppose after transforming, if you can solve the sum in 30 minutes, after transforming, let me put it here. After transforming, let's say 30 minutes लगता है problem solve करने. How many minutes? 30 minutes. दिखा रहा हूं. Without transformation, more than 3 hours. Without calculator, I am saying without calculator. ट्रांसफॉर्म करेंगे तो 30 मिनट्स में हो जाएगा. एंड ट्रांसफॉर्म नहीं किया तो 3 घंटा लगेगा. दिस इज आई एम टॉकिंग अबाउट विदाउट कैलकुलेटर. और अगर कैलकुलेटर लेते हैं कैलकुलेटर, तो योर सम कैन बी डन इन 15 मिनट्स with calculator and otherwise 45 minutes with calculators. So even if you are using calculator, what is happening? You are saving your half an hour and both will give you same answer. समझ में आ रहा है क्या? I'm just giving an example. It depends how fast you are at calculation. Okay? Sure. Yes. Somebody wanted this screen. Take this screen. Now we'll solve a sum. तो ज्यादा clear हो जाएगा. Okay, done. चले क्या? करो sum solve. Now this sum I'm noting down the time and I'm keeping. Okay, we are starting the sum at 6:18. 6 hours 18 minutes. पहला सम है, मेरे को एक्सप्लेन करना पड़ेगा, थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगेगा, बट लेट्स सी हाउ मच टाइम इट टेक्स. इवन नेक्स्ट सम में भी विल नोट डाउन द टाइम. डन हर्ष. डियर स्टूडेंट, ये 3 फॉर्मूलाज याद रखना है. नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3. तीन को याद रखना है. वो YT नहीं बोलने का. Y इज इक्वल टू A डैश प्लस B डैश U. Summation Y is equal to NA dash plus B dash summation U. And third, summation UI is equal to A dash summation U plus B dash summation U square. हाँ, समझेगा बेटा, समझेगा भी. सम सॉल्व करेंगे उसमें समझेगा. नहीं समझा तो बोल देना. हाँ, ये 3 फॉर्मूला रट्टा मारना है, बाय ऐड करना है. चले, क्या बोल रहा है देखो.
use the method of least square to fit a trend line to the data in problem 1 above. Also obtain a trend value for the year 1975. पहला इतना ही पार्ट कर लेते हैं. What the problem is saying? Use what? Use which method? Least square. Which method to use? Least square method to use. Okay. Which method to use? Method to use is least square method. हमको यूज करना पड़ेगा. क्यों least square करना पड़ेगा? क्वेश्चन में बोला है least square method. So we'll have to use least square method. Correct? चलो करो आंसर. Answer. First line of the answer will be cos answer. क्या करेंगे हम लोग? t को ट्रांसफॉर्म करेंगे. t का वैल्यू बड़ा है. Are the values of t big? Are the values of t big? Yes, that is called as high magnitude. क्या बोलते हैं उसको? High magnitude. Values of t are bigger, so let us transform them to u to make the calculation simple. So let us write down that point. Values of t are of higher magnitude. Magnitude. What do you mean by higher magnitude? Big values. Values of t are of higher magnitude. Therefore, let us transform. Let us transform. क्या ट्रांसफॉर्म करेंगे? Let us transform what? t to u. Let us transform t to u. क्यों करेंगे? t to u to make calculation easy. समझा क्या पहला लाइन समझा क्या आप लोगों को? हाँ, we'll get lower magnitude value. पढ़ाई के लिए मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट. प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी, जैसे जी, नीट, कैट, सीए फाउंडेशन, सीएस सीट, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी एमबीए एंट्रेंस, SYJC कॉम, TYB कॉम और भी बहुत कुछ. चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस, और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट. कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान. इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक. तो अब देरी किस बात की? प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री और अपनी सफलता की कहानी लिखें. लिंक डिस्क्रिप्शन में है. प्री एग्जाम ऐप स्मार्ट. लोअर मैग्नीट्यूड वैल्यू. टी का वैल्यू बड़ा है इसलिए हम लोग ट्रांसफॉर्म करें. टी का वैल्यू छोटा होता तो क्या ट्रांसफॉर्म करते थे? अगर टी का वैल्यू छोटा है तो ट्रांसफॉर्म करेंगे क्या? नो, देन देयर इज नो नीड. देन देयर इज नो नीड. फिर भी ट्रांसफॉर्म करेंगे तो भी चलेगा, बट देयर इज नो नीड देन. ओके, नाउ ट्रांसफॉर्म करते हैं, बट ट्रांसफॉर्म करने के लिए n चेक करना पड़ेगा.
number of observation, n is equal to चेक करो n कितना है, n is equal to how much? पार्टिसिपेट करो दोस्तों, एवरीवन प्लीज पार्टिसिपेट, तो समझ में आ जाएगा। n कितना है अपना, 11 है, 11 ऑब्जर्वेशन, n is equal to 11। 11 means even या odd, 11 means even या odd, और ब्रैकेट में लिख देना 11 इन ब्रैकेट और, therefore u का odd वाला फॉर्मूला आएगा, therefore u is equal to what is that formula? t minus middle t value upon h। correct? So that is equal to, yeah, u is equal to t remains t as it is minus middle t value, which is the middle t value, सिक्स वैल्यू विल बी मिडल। कितना वैल्यूज है अपने पास, वैल्यूज कितना है, 11 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, 11 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, सिक्स वैल्यू, सिक्स वन विल बी मिडल। अपने पास 11 है, 11 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, what is that? 1967। so let me write t minus 1967। what is h? h is difference between two successive years, कितना है, 1। therefore u is equal to, final answer, u is equal to t minus 1967। क्लियर? क्लियर यहां तक? नाउ दोस्तों जस्ट वन सेक, लेट मी यूज ब्लैक कलर एंड राइट डाउन हियर व्हाट आर आवर फॉर्मूलाज याद है क्या आपको? अपने फॉर्मूलाज क्या है, तीन फॉर्मूला। फर्स्ट फॉर्मूला इज y इज इक्वल टू, यू मे से yt, y इज इक्वल टू a प्लस bt, a dash b dash t, agreed? normal formula, this is main formula, y is equal to a dash plus b dash t। ये y के जगह पे नीचे इधर स्मॉल t लिखते हैं, ऑप्शनल है वो। and what are the other two normal formulas? समेशन वाला था वो, what was that? summation y is equal to na dash, टी नहीं आएगा इधर, तो से इधर टी नहीं आएगा ना, ये गलत लिखा मैंने, टी ट्रांसफॉर्म किया ना, टी इज कन्वर्टेड टू यू आएगा। na dash b dash समेशन यू, देखो ये y था, y को समेशन लग गया, पहला y है ना, उसको समेशन, n में u को समेशन, और a डैश के साथ n आ गया, समेशन y समेशन u। और एक फॉर्मूला क्या है, समेशन, क्या फॉर्मूला है, समेशन u y इज इक्वल टू a डैश समेशन u प्लस b डैश समेशन u स्क्वायर।
आप लिखो मत, मैं जस्ट ब्लैक पेन से आपको लिख के बता रहा हूं। हेलो, these are the summation formulas, याद रखना है। now how many summations are there? कितने summations है? unique summation 1 2 summation ui, summation u सेम ही है, ये सेम है, इसको काउंट नहीं करता हूं, एंड समेशन यू स्क्वायर। हाउ मेनी समेशंस टू फाइंड आउट, कितने समेशन हमको ढूंढने हैं? 4 समेशन। विच आर दोस? कौन से समेशन ढूंढने हैं? समेशन y, समेशन u, समेशन ui एंड समेशन u स्क्वायर। ओके, नाउ मेक दिस कॉलम्स, ऑलवेज यही कॉलम बनाने एंड राइट डाउन द डेटा। आई एम वेटिंग फॉर यू। कितने कॉलम बनाएंगे? ऑलवेज पहला ईयर कॉलम, टी नहीं लिखना है, मत लिखो, टी लिखेंगे अच्छा है। देन वाई, यू स्क्वायर, यू वाई एंड ट्रेंड वैल्यू। ऑलवेज दीज आर द कॉलम्स। कितने कॉलम बनाएंगे? काउंट करना है, काउंट करके देखो 1 2 3 4 5 एंड 6 कॉलम्स। 6 कॉलम्स, ऑलवेज यही 6 कॉलम आर नॉट गोइंग टू चेंज। मेक कॉलम्स, आई एम वेटिंग। Once done, let me know. Okay, the first done came in. Hazel is saying done. Yes, Archana, Aneri, yes. Yes, yes. Okay, so I hope it is done now. Okay, now look at what is the third column. You got this values 1962, 1963 given in question. Values of year and values of y given in the question, agreed? Copied from there. Hello, पहला कॉपी किया, कॉपी। नाउ u का फॉर्मूला जरा पीछे जाके देखो, u का फॉर्मूला क्या है? u is equal to t minus 1967. Let me write for you here. u is equal to t minus 1967. What is t? First t is, पहला t कितना है? $1962 minus 1967 कितना आंसर आएगा? -5. Everyone got that -5? Right here first में -5. Okay, do the next one. 1963 minus 1967. Yes, -4. And once you know the second number, now कितने का डिफरेंस है? 1 का ना, तो keep on reducing by 1, -3, or other increasing by 1, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 and 5. Add 1, yes. Hello. कितना वैल्यूज लेने को बोल रहा हूं? 2 वैल्यू चेक करो फिर आगे लिखो, क्योंकि कभी कभी ऐसा भी आएगा -5 -3 ऐसे भी आएगा। अगर -5 -3 आए तो नेक्स्ट वन विल बी -1
then 1, then 3, then 5, ऐसे आएंगे. ऑलवेज गैप 1 का रहेगा, इसका गारंटी नहीं है. हेलो हेलो डियर स्टूडेंट, क्लियर क्लियर. नाउ यू स्क्वायर आएगा करने को, यू स्क्वायर -5 into -5 is 25, positive 25, square is never negative. 16, 9, 4, 1, 0, 1, 4, 9, 16, 25. Clear? $16, $25. Clear? Now UY आएगा करने को, UY U and Y का सेकेंड कॉलम एंड थर्ड कॉलम का मल्टीप्लीकेशन, UY U and Y का मल्टीप्लीकेशन 0 into -5